अलग करना है, नहीं यार कुछ अलग खाना है, नहीं कुछ अलग पहनना है, सबसे हटके लगना है, भेड़ की चाल बिल्कुल भी नहीं चलना है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। जिंदगी में ना बस कुछ अलग करना है। कितने लोगों से सुन चुके हैं आप ये? 100, 1000, लाख, करोड़। आजकल कुछ अलग करना अलग रहा ही नहीं। And that's what just I feel. You're very well within your rights to think what you want to feel. पर मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारे रास्ते, सपने, मंजिल सब ऑलमोस्ट सिमिलर है और करोड़ों से मैच करती है। तो फिर डिफरेंस क्या रहा? Where is the originality part? I mean, मेरे बायोमेट्रिक्स और फेशियल फीचर्स के अलावा what is that thing that makes me stand apart from the crowd? The way of doing things, I guess. The execution part. एक आइडिया एक टाइम पे हजारों को आ सकता है, और उस एक आइडिया को आगे ले जाना, शेप करना, मार्केट करना, एंड रिजल्ट तक लेके जाना, द एग्जीक्यूशन पार्ट वो हर इंसान का 100% ओरिजिनल होता है। एंड व्हाई डू आई से दैट? हमारे आसपास कितने सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, बट समथिंग फील्स डिफरेंट व्हेन आई सी दीज नेम्स। श्रीदेवी, रेखा जी, आलिया भट्ट, इजंट इट? क्रिकेटर्स भी काफी है, हर गली गली में क्रिकेटर है। But something hits very different about Sachin Tendulkar, Dhoni, Virat Kohli. Wow! And what makes them stand apart? A sense of originality in their working style. बहुत ओरिजिनल एक्टिंग, बहुत ओरिजिनल वे ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। वो लोगों को कॉपी नहीं करते, लोग उन्हें कॉपी करते हैं। 100% ओरिजिनल। So the next time you see someone with a sense of originality in their working way, with a little bit of style and confidence, you say, damn, that person's got some panache. Hello everyone, Sat Shri Akal and welcome back to my channel Verbamore, the love for words. आज है एपिसोड 10 और आज के एपिसोड में हम लोग सीखेंगे द मीनिंग ऑफ वर्ड panache. आप लाइफ में कभी भी किसी इंसान से मिले और आपको लगे कि इस इंसान में स्टाइल है, कॉन्फिडेंस है, सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी इन द वर्किंग वे है, और इन तीनों क्वालिटीज की वजह से लोग उन्हें काफी एडमायर करते हैं, देन यू हैव गॉट टू से द पर्सन हैज panache. एग्जांपल, रजनीकांत सर, एक्शन स्टाइल एंड कॉन्फिडेंस लाइक नेवर सीन बिफोर. रेखा मैम, ब्यूटी स्टाइल एंड कॉन्फिडेंस लाइक नेवर सीन बिफोर. And not to forget, ये दोनों ही आइकन्स अपने आप में 100% ओरिजिनल है and their admirers, I don't have to say about that. But is panache restricted only to fashion, Bollywood and acting? What about us, the आम आदमी? इस वर्ड का मीनिंग जितना मैंने सीखा है, I have to say that panache खुद को पहचानने से आता है, अपने आसपास स्टैंडर्ड्स रखने से नहीं. And that's why मैंने डिसाइड किया कि इस बार हम लोग इस वर्ड का मीनिंग सेंटेंसेस के थ्रू नहीं समझेंगे. Why not describe and learn about real life examples, real life stories? And trust me guys, you're going to take a lot back after you watch this video. So stay tuned and let's get started. Steve Jobs. उनकी लाइफ जरूर छोटी थी, but काफी influential थी. I mean, like, we may not eat an apple every day, but we do see an Apple iPhone every day. He was the man behind iPhone. But did he have panache? Let's find out. Style and confidence. आपको 2007 का iPhone launch याद है? Black turtleneck, blue jeans, sneakers, hell lot of confidence. I mean, Steve Jobs की वजह से and the way he presented the product, that was one of the most dramatic launches ever. He has completely changed the style as to how tech CEOs present their models or technologies or products on stage now. So yes, style and confidence bang on. Originality. उन्होंने सिर्फ products बनाए नहीं हैं, उन्होंने तबाही लाया है. He had disrupted entire industries at that point of time. Computers, retail stores, smartphones, music, animation, UI, what not. I mean, the man was truly blessed. So yes, originality, bang on. But did people admire him? For his technical gadgets, yes. But there was something else that people admired him for.
To quote, "Shake off this erroneous notion that life is there and you are just gonna live in it. Embrace it, change it, improve it, make your mark upon it." Well, he did walk his talk. An adopted college dropout, admired by millions. Decide for yourself, did he have panache? Zendaya, the global icon. She needs no introduction. But for those of you who do not know her, let me tell you that she is an American actress and singer. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत डिज्नी से की and that too when she was just 13 years old. काफी सारे हिट्स दिए उन्होंने like during the series, Spider-Man series, Euphoria series, Challengers and a lot of albums. But does she have panache? That is the question we need to ask. Let's find out. Style. अगर आपने उनके पिक्चर्स देखे हैं और अगर आपने नहीं देखे तो मैं चाहूंगी कि आप देखो. Undoubtedly, she is the fashion queen known all across the globe. So yes, she's got style. Confidence. Zendaya might not come across as a vibrant person, but she is effortless. That's what they call her. She's effortless in meeting and greeting people. There's something about her. She's cool, grounded, and egoless. And that's what fuels her confidence. So yes, confidence there is. Originality. Okay, let me quote her to make you understand that. "I've gotten to a point with fashion where I just don't care. I wear and I do what I want because I like it. Because I am confident in it. Because it makes me feel good. That's the only way you can do it. The greatest of the great are only great because they did what they wanted. And they didn't allow people's opinion to destroy who they are and stop them from being themselves." I mean, you can't get more original than that. And I'm not even going to talk about admiration because yes, people do admire her. So yes, to sum up, she has got panache. And now to sum up our episode, we can safely say that panache सबके पास हो सकता है, पर सबके पास होता नहीं है. Paradox हो गया ना, जैसा हमने लास्ट एपिसोड में सीखा था. Yes, सबके पास हो सकता है, but सबको उसको बस पहचानने की जरूरत है. The day you discover yourself, the day you know your original self, the day you work and behave as per yourself, with a little bit of confidence, you will have people admire you and you will have panache. And if you already have, ignore this. We come to the end of our episode and I really hope you liked the episode. You learned a lot. आपको बहुत मजा आया. अगर मजा आया आपको तो प्लीज वहाँ पे लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सा प्यार बरसा दो यार. If you have any feedback, any suggestions or anything that you want to share with me, you know what to do. Write them down in the comment section below and I would love to get back to you. Okay, you guys, I'll see you in the next episode. Until then, sayonara, bye-bye.